I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. बताया। अच्छा हो तो जैसा भी होगा, चूंकि हॉलीडेज के दिन तो क्लास ऑफ हो जाती है, तो खैर जो भी हो तो आशीष सर उसके बाद इन्फॉर्म कर देंगे। एक सेकंड, जरा कॉल है। चलिए, तो आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया। वी विल स्टार्ट स्प्रिंग बूट। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप माइन्यूटली एक्सप्लेन करेंगे। स्प्रिंग नॉलेज ऑफ स्प्रिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं और फीचर्स दे आर सिमिलर। स्प्रिंग बूट कम्प्लीटली नई नहीं है, एंड मिसकॉन्सेप्शंस भी नहीं पालना है कि स्प्रिंग बूट एंड स्प्रिंग आर टू डिफरेंट थिंग तो है ही। स्प्रिंग बूट इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस स्प्रिंग, दोनों का रोल अलग अलग है ना। नाउ टुडे वी शैल सी सम ऑफ द फीचर्स, मेन फीचर्स ऑफ स्प्रिंग बूट। तो बिफोर आई ओपन द पीपीटी स्लाइड्स, इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मेन थिंग हमें ये समझनी चाहिए कि स्प्रिंग बूट एप्स जो हम लोग डेवलप कर रहे थे, तो स्प्रिंग बूट में क्या था, सॉरी नॉट स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग, lot of configurations required थी। that configurations जो requirement, हमने तो बहुत small applications create किया था, तो that applications requirement जो है वो दो तरह के configurations requirement, two types के हो जाते हैं। एक तो all those external bin objects जो हमारे applications में create होता है, and all those external jars जो Maven level की होती है, Maven dependencies we can call, because Maven includes all those jars into our applications। तो ये चीज़ें जो है कॉन्फ़िगरेशंस का प्रॉब्लम हमारा सिंपल हो जाता है स्प्रिंग बूट में, क्योंकि स्प्रिंग बूट में एक फीचर होती है दैट इज कॉल्ड ऑटो कॉन्फ़िगरर। तो ऑटोमेटिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑटो कॉन्फ़िगरर जो होती है, ऑटोमेटिकली हमारे सारे कॉन्फ़िगरेशंस को प्रोवाइड करता है, तो हमारी प्रोग्रामिंग ईजी हो जाती है। एंड ऑल्सो देर इज़ ए स्प्रिंग .io, जहाँ से हम रैपिड डेवलपमेंट कर सकते हैं। जितने भी स्प्रिंग में हमें एक्सटर्नल जार्स जो मैवन लेवल की डिपेंडेंसीज है, दे ऑल कैन बी all together can be configured and set, and very easily by help with the help of a spring io you can create program with a very rapid development that is quick। तो उससे हमारा टाइम सेविंग होता है। बट टुडे आज हम वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। minutely we will try to see each and every steps, and we will try to configure all the initial parameters to set up our Spring Boot applications. We will do it by our own. So I hope you will understand, and you will enjoy. Things are very, very simple, and try to see all the basic steps what I follow. अब हम उसके पहले हम जरा पीपीटी स्लाइड्स जो हमारा प्रिपेयर किया हुआ है उसमें हम फ्यू इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स हैव, दिस इज द स्लाइड फॉर यू। सो मैंने जैसा कि कह दिया कि आप दो बातों को ध्यान में रखें कि स्प्रिंग बूट का मेन एप्लीकेशन जो होता है दैट इज टू क्रिएट माइक्रो सर्विसेज। We should understand what is microservices.
इनफैक्ट अर्लियर क्या होती थी कि जब भी कोई एप्लीकेशंस क्रिएट किया जाता था, the entire models used to be created and installed at one locations as the whole as a one single large applications. तो अब आप ऐसा सोच सकते हो कि that large applications is broken into several sub applications. वो सब एक अलग अलग टास्क, एक अलग अलग एप्लीकेशंस की तरह होता है. एंड टू दैट वी व्हाट वी कॉल इट एज ए माइक्रो सर्विस. माइक्रो का मतलब छोटा हो गया एंड सर्विस का अर्थ तो समझ ही रहे हो, द काइंड ऑफ थिंग व्हाट वी गेट. जैसे कि फॉर एग्जांपल एडवांटेज इसका क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यू पीपल आर ऑलरेडी belonging to particular engineering college and your colleges may publish results. Okay, so अगर मान लो मैं एज ए थर्ड पार्टी कोई सेपरेट एक एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ, एक वेबसाइट क्रिएट करता हूँ, जिसमें मान लो फॉर एग्जांपल थ्रू माय वेबसाइट आल्सो यू कैन सी योर रिजल्ट्स. अब गौर से देखने की बात यहाँ पे ये है कि वेबसाइट जो जो सॉफ्टवेयर जो आपके कॉलेज के एजुकेशनल सारे जॉब्स को, एजुकेशनल टास्क को जो सॉल्व कर रही है, हैंडल कर रही है, दैट इज डिफरेंट सॉफ्टवेयर. So through creating smaller services, that is called microservices, I shall, my website will put a request to the college server, and that will return the result back into different particular notations. Especially those notations are said to be as JSON object, JavaScript object notations. That is जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज में किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. बाय यूजिंग दैट सिंटेक्स हम बेसिकली वी दैट्स जो माइक्रो सर्विसेज होगा दैट विल रिटर्न द डेटा. ओके, एंड दैट डेटा विल बी रिसीव्ड एट आवर एंड. अब हमारे एंड पे तो बस डेटा मिल गया. नाउ वी हैव टू डिसाइड हाउ द डेटा विल बी व्यूड. दैट्स द important thing is how the data will is viewed. That has to be uh, taken into the considerations. Okay, main thing हो गई to create microservice. The advantage of boot over Spring is it reduces the pain of setting up those configurations issues, है ना? And we will see later. It's interesting. So that is why I have tried to create step by step. Try to see it. Okay. Now there are some important features of a Spring other than that general features that I have mentioned. First thing is Spring applications. This is a class of a Spring Boot by using which developer, that means we people, can conveniently develop the Spring applications. We will have a lot of conveniency because of already we know that because of configurations issues. Second feature is externalized configurations. Externalized configurations means you cannot say that if any applications we are developing, that does not mean that it will have zero level of configurations. There will be certain configurations also, and that configurations are stored separately in the form of XML file. और ये चीजें आपका स्प्रिंग में भी था. दैट इज एक्सटर्नलाइज कॉन्फ़िगरेशन बाय यूजिंग पॉम फाइल. पॉम फाइल तो होती है, दैट इज मैवन कॉन्फ़िगरेशंस के लिए पॉम फाइल है, pom.xml, एंड अदर कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल्स जो हम क्रिएट करते हैं. So that is externalized configurations. So that is a term which software industries uses, that is called YAML. So it's basically a readable language format. So in nutshell, we can say it's a text file kind of thing. And so that is stored separately, and that controls the working of the entire applications. So as soon as we get into the web applications or any complex applications,
any complex applications may not be only a Spring or a Spring Boot. Configuration plays the vital role. And if the external configuration is the advantage becomes is normally that is a kind of set of instructions, set of informations given into a readable format, that is into as a text format. So that becomes easy to manage. That already we had seen also. ओके द नेक्स्ट फीचर इज वाई एम एल सपोर्ट, तो वही चीज हो गई जो प्रीवियस फीचर से था. द वन थिंग इज मेन इज इंपॉर्टेंट इज प्रॉपर्टी फाइल. So property file is nothing but it is a text file that is having a set of properties needed to run the applications. Just for example, by default your applications run at the port 8080. आप जानते हैं Tomcat always runs at port 8080. It is default port unless we change. If we want to change, then we can do the modifications. We can do such kind of configurations into the properties file. So it is not fixed that it will always execute at port 8080. That can be controlled by setting up the things into the property file. And guys, one thing is very important. This Spring Boot has the Tomcat web server is embedded into this. That means in order to run applications when we are creating using Spring Boot, separately the Tomcat should need not be installed. It's embedded that while executing the software will come to know. And that is very while deploying software, things becomes very easier for us. Once we create applications, and now normally when we create applications we'll be developing at our own system, but once when we are going to deploy, that is installations process on the client's terminal, then we don't have to take pain separately of handling all those tomcats and all. That is internally embedded. Embedded मतलब अंदर में ही वो incorporated है. Okay ना? So again, there is another feature called profiles and logging. What's the use of profile? By profiling, you can segregate. मतलब क्या अलग कर सकते हो different parts of the applications, and this plays a vital role at the time of unit testing. In software engineering term, you would have seen, you would have read in the topic called testing. So there is a term called unit testing. जैसे मान लीजिए आपकी बाइक है, तो every part of the bike unless works properly, the whole system will not work, है ना? So engine has to be tested separately, the electrical part has to be tested separately, the wheel mechanism, the gear mechanism, all those mechanism can be tested separately and integrated all together. So that is called segregations, matlab separations of that parts of the applications, and there the profiles play the vital role. Thereafter, there is a logging. Logging is there is a common log informations. What happens actually when the application works? Then there are certain situations when the applications might create certain errors at runtime, and that informations of that errors which is getting created at runtime has to be recorded, has to be logged into a file, and that is called log file informations. And Spring Boot has internally made that logging informations very rich, and that easily can be handled to do so. Then comes internationalizations, admin features, and securities. What internationalization is? When you develop applications, then at lot many times the situation is our applications might use different languages, so the preference of language becomes also very important features, है ना? So to this Spring Boot has already this all embedded, these all jars, all these features, and they can be used in order to get this benefit. Then we have admin feature, we have got securities issues. Security is a very important. The thing is, security for any applications is a very
serious concern for the developer. So by default, when Spring Security enables the class path of the web application secured, automatically, whatever the class path is, that is automatically secured. So that is the one of the great feature of security. So there are many things which Java and Spring Boot. Right now we are talking of that all these features about Spring Boot. Why the web developer prefer to do all this at professional level when we have such kind of applications? The security becomes a very important concern. So these are the features. Okay. Now again, at the beginning of today's class, I had said the Spring Boot's auto configuration feature. What happens in MVC? There is a huge amount of configurations that is needed, and this is solved by a Spring Boot. It has got a feature like that is called auto configurer. So how does it work? What a Spring Boot is does that a Spring Boot looks two things: a framework available on the class path and whatever the configurations of the application is. Based on these two, a Spring Boot provides the configurations which is needed. Okay. Then we have the very important feature called a Spring Boot starter. ये starter तो इसमें है a Spring Boot starter project. Starter projects are a set of convenient dependency descriptor that you can include in your applications. You can get one stop shop. That's इसका मतलब क्या आ गया? Just like it's a kind of you can say it's a kind of supermarket. It's a large shop where you get in and you get all your uh, need, all the items as per your need, and you can get it from that place. So that kind of you have a Spring starter project is a bundle of all those that we shall see in any applications. What is that? What happens? You need to deploy the thing, you need to install the thing, you need to configure those things. And when you have certain JP application, that is database applications and all, things should be uh, connected, and the data should be with all securities should be passed from one gateway to another gateway. All these kind of issues can be handled. Now what is a Spring Boot starter parent? In a Spring Boot application, this is the first thing which we need to set up: a Spring Boot starter parent. Remember, this Spring Boot starter parent keeps makes your problem very simple, in a sense that when we all know that we are going to use many jars in order to perform different functionality. Okay, so always because of the improvement of versions of different jars, that is different applications, there might be compatibility issues. So this Spring Boot starter will take care of this problem. It automatically decides the which particular version is compatible to one another, and the same is downloaded. So look at this, ये हमारा पेन कितना आसान हो जाता है. So that is why a Spring Boot starter is the first, इसलिए इसका नाम पड़ा a Spring Boot starter parent. And with this tags, whatever thing you are seeing, the same interest we have to do into the POM file. Okay, वो तो practically हम लोग देख लेंगे. Now you have different samples of a Spring Boot starter project: a Spring Boot starter web services, a Spring Boot starter web, a Spring Boot starter test, a Spring Boot starter JDBC, and so on. So whatever web applications we do, normally web applications as well as RESTful applications for creation of REST APIs. तो REST APIs को हम लोग RESTful API बोलते हैं, RESTful applications, and for all those we use
Spring Boot starter web apps. So these are all the projects which is already kind of template, you can say, that is already pre-created, made bundle of different jars. We have to just deploy it into our applications and enjoy their features. So जाहिर सी बात है कि it is a bundle of library. So whenever the bundle of library comes, more than the logic, the things becomes important to remember those. So this you can only do by practicing and regular implementations. Okay, then comes the Spring Boot embedded server, that already I have spoken about this feature. A Spring Boot comes with the server embedded, and the by default Tomcat web server is embedded, and as soon as the Spring Boot applications runs, it also runs the embedded Tomcat web server. And by default, already I had said that this Tomcat web server will run on port 8080. So remember, if into your applications, if you would have also installed the separately Tomcat web server, then they also might be running at port 8080. So in that case, the port 8080 becomes easy. This will not be free. Then your applications will fail to run. So keep in mind, take care of all these scenarios. Okay. Then we have Spring Data. What is a Spring Data? It's a abstractions, that is set interfaces which communicates with the underlying data sources. So it's a kind of layer. We don't have to worry about the under layers, and all those communications and all the internal issues will be taken by the Spring Data. Whatever database is that, we don't have to care. Everything is taken care. Then Spring Initializer. This Initializer is the richest features of a Spring Boot, and already you have seen that there is a Spring Initializer website name is start.spring.io. that इसको हम लोग कल देखेंगे, आज नहीं. आज देखने के बाद क्या होगा कि we will not come to know how internally thing happens. तो आज हम एक एप्लीकेशंस को स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करेंगे, rather than showing you the pre-created. Already they are pre-created, but I shall create in front of you so that you can watch it carefully and note down also the important steps. Don't wait for the only watching videos. You are watching live, so you can note down the important points as well. So this Spring Initializer makes the whole applications very rapid and easy for the web developer, software developer. Okay, that we shall see, so in the next successive tomorrow or day after tomorrow. Okay, now see, these are the 5 basic steps which you should follow to create a Spring Boot project. First thing is a Spring Boot starter parent. Already we had seen a Spring Boot starter parent. First thing, I should set up a Spring Boot starter parent. These are all steps. क्या है? These are all different setting what we have to do. The first setting is we have to set up the Spring Boot starter parent. Second thing, Java 8 versions. Java 8 version is the standard versions what industries are using. So all the applications, all the jars, all the Spring libraries, Spring Boot, they use Java 8. So you should have Java 8. Don't worry whether you have into your system or not, you don't have to. Then you have a Spring Boot starter web. This Spring Boot starter web is needed to develop, already as I have said, to develop the general web applications and RESTful APIs and so on. Then finally, when you create all this, you need to execute the applications. You need to run the system, and for that, to run the system, few plugins are required. Okay, so those plugins has to be also
put into the POM file, and that plugins will be helpful for executing your Spring applications. And once everything is created, you will launch the Spring Boot applications. But only the thing is, you should have Eclipse, latest Eclipse IDE installed, which is having the Maven support. Okay. Now, these two annotations I'm describing you, REST controller annotations and request mapping annotations. These are the annotations which we haven't seen earlier. Actually, these two annotations belongs to Spring MVC. तो आप देखिए, if you have certain basic fundamental knowledge about Spring MVC, the understandability, a kind of basic knowledge we have already developed, and that knowledge will help us to implement and understand boot applications very easily. It will make easy. Okay, so what request mapping and request controller does? These are the two annotations. Request mapping actually maps the URL with the uh, method of the REST API which has to be called. Actually, that is REST controller. And REST controller is the annotations that tells the Spring to render the resulting Spring directly back to the caller. So it is mandatory when you will create controller, you have to directly use this REST API annotations. And for mapping, as the name suggests, we have to do this at the rate request mapping annotations we have to use for the mapping. So both these annotations are of Spring MVC. Okay. Now let's try to create. Only keep in mind, keep the things, keep the idea simple. अगर कुछ समझ में आई नहीं आई, you will have to read the text, you will come to know all the thing, because it's the topic is new, so we have to read the text from different sources. Only keep one thing in mind, that in the previous class we had created applications using a Spring MVC. There we used to have some configuration issues. अब यहाँ पे ये issue बहुत कम होगा. Let's see by creating this applications. Okay, now let's start and see with patience. Okay, this is the first step. Now already I have created just for you a simple applications, but I'm not going to show you anything from that today. I shall create a fresh applications in front of you. Same applications. What is this applications? First of all, our aim is what? To create a Spring Boot applications. Are you ready, guys? Yes, sir. Okay. Let's see. I will create it step by step. That will make the whole concepts clear. We have to create project as usual. File, new. Up now, one thing, one of our student was having problem. Akshita. Now see the kind of screen what you are seeing on my laptops. What problem you get? You just communicate with me. फाइल पे हमने प्रेस किया, फिर न्यू के बाद मैवेन, ये आपके सिस्टम में दिखता है सर? वहाँ पर क्रिएट मतलब न्यू प्रोजेक्ट होता है, फिर उसके अंदर जाके मैवन प्रोजेक्ट मिला था. तो ये देखो हमारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो नहीं था. नहीं सर, ऐसे सारे अलग अलग नहीं थे. प्रोजेक्ट था, उसके अंदर जाके मैवन था, वो भी डाउनलोड करने के बाद आया था. हाँ, तो इसका मतलब तुम्हारा आईडी ओल्ड है. हम समझ गए. यहाँ पे प्रोजेक्ट क्लिक करने के बाद आता है और ये थोड़ी सी नहीं है. तो ये चलिए इस आईडी का जो हम जिप फाइल हम उस पर डाल देंगे, आप उस पर ले लेना. इसमें एक्लिप्स में बहुत सारे वर्जन्स है.
तो बिगनर स्टूडेंट को थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है कि विच सुटेबल वर्जन हैज टू बी डाउनलोडेड। ओके, तो अब स्टेप तो सिंपल है, मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट हमने किया, डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आज देखो मैंने इसको अभी तक हमने स्किप किया था सॉरी, आर्केटाइप हम सेक्शन यूज करते थे। आर्केटाइप सेक्शंस यूज करने के बाद क्या होता था कि वी आर सपोज टू सेलेक्ट द डिफरेंट टेम्पलेट्स। आज हम उस चीजों को नहीं करेंगे, आज हम कोई टेम्पलेट्स यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कर रहे हैं क्रिएट, इसको स्किप कर रहे हैं। मतलब कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स यूज नहीं कर रहे। स्टैंडर्ड टेम्पलेट यूज करने का मतलब यही है कि that testng or that jar gets automatically configured and loaded। अब ग्रुप आईडी जैसा कि मैंने दे दिया com.ph, कुछ भी दे सकते हैं, एंड artifact id is basically the project name। तो प्रोजेक्ट नेम हम दे रहे हैं spring spring boot चलो स्प्रिंग बूट 1 ही कर देते हैं, ठीक है। स्प्रिंग बूट 1 इज द नेम ऑफ द फोल्डर। ओके, अब यहाँ पे हम कोई चेंजेस हमने नहीं किया, पैकिंग जार्स वगैरह सब कुछ सेट है। वी विल डू द फिनिश। मैवन बेस्ड प्रोजेक्ट हमने लिया, हमने फिनिश किया। अब इस तरह से देखो स्प्रिंग बूट 1 फोल्डर क्रिएट हो गया। इज दैट ओके? नाउ लेट मी मिनिमाइज द प्रीवियस वन एंड एक्सपैंड। अभी हमारे सोर्स में कुछ भी नहीं होगा, और इसमें लुक दिस, आफ्टर दिस प्रोजेक्ट गेट्स क्रिएटेड यू कैन सी एक स्मॉल एम की तरह यहाँ दिख रहा होगा, एक छोटा सा एम, ये एम दिख रहा है, इसका मतलब ये मैवन प्रोजेक्ट हो गया। अभी इसमें मैवन फोल्डर नहीं दिख रहा है ना। ओके, सो दिस मच स्टेप इज सफिशिएंट। अब 1 बाय 1 हम चीजों को चलते हैं। हमने क्या देखा था, अब कोई भी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें हमारा एक मेन फंक्शंस बनाना होगा। तो आई एम क्रिएटिंग ए क्लास, ओके, न्यू क्लास, है ना, और क्लास का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। आई एम गिविंग एप्लीकेशंस, ओके, ठीक है ना। एप्लीकेशंस मैंने क्लास का नाम दिया, और इसमें हमको मेन फंक्शंस बनाना है, इसलिए हमने चेक कर लिया एंड फिनिश किया। लुक अगेन, अब यहाँ पे कोई भी हम एक मैसेज दे देते हैं ना, SYSO प्रिंटलन, और यहाँ पे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस एंड सेव करते हैं। जस्ट अभी हमने कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया है, मैवन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मेन दिया, एंड जस्ट आई एम ट्राइंग टू सी जस्ट बाय एग्जीक्यूटिंग। अभी हमने कोई कॉन्फ़िगरेशंस नहीं किया है, जबकि हमारा स्टेप क्या था याद करोगे, जस्ट सी व्हाट एरर, कोई एरर नहीं है, ये एप्लीकेशंस हमारा रन कर रहा है, ठीक है। तो अब नाउ फॉर स्प्रिंग बूट हमारा स्टेप्स क्या था, सबसे पहले हमें पॉम फाइल पे जाना है, एंड इस पॉम फाइल में देखो दिस इज द काइंड ऑफ, ये हमने ग्रुप आईडी दिया था com.ph, वो दिख रहा है। आर्टिफैक्ट आईडी वाज spring_boot1, तो ये दिख रही है, ठीक है। ऑल दिस इंफॉर्मेशन जो वहाँ पे दिए थे। अब सबसे पहला काम क्या करना है कि जो हमारा 3 स्टेप्स था, जस्ट सी दोस पीपीटी स्लाइड्स के स्टेप्स, बस व्हाट इज दिस 5 स्टेप्स। स्प्रिंग बूट स्टार्टर पेरेंट होना चाहिए, जावा 8 होना चाहिए, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब होनी चाहिए, स्प्रिंग बूट प्लगइन होनी चाहिए, दैट्स इट। इफ एवरीथिंग इज रेडी यू कैन लॉन्च द स्प्रिंग एप्लीकेशन। तो 4 स्टेप्स होना चाहिए।
एंड ये चारों स्टेप्स के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन है वो पॉम फाइल में हमें एंट्री करना होगा। दैट्स इट। ये हम गूगल करके सर्च कर सकते हैं कि पॉम सिंपल पॉम फाइल फॉर स्प्रिंग बूट ऐप, वो हम कहीं से भी मिल सकता है। वो हमने एक अभी यूज़ किया था। आप जैसे गूगल पे जैसे लिखोगे, है ना, यहाँ पे spring.io, ये आप यहाँ पे जाएंगे, उस पे स्प्रिंग के बारे में सारे सैम्पल्स टेम्पलेट्स सब कुछ मिलेंगे। दैट्स नॉट एनीथिंग हिडन। लुक एट दिस, देख रहे हैं ना, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस का उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे सारे स्टेप्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ से आप देख रहे हो ये पॉम फाइल का सैंपल देखो। मैंने क्या किया, ये पॉम फाइल यहाँ तक ये पेरेंट से मैंने कॉपी करना शुरू किया। लुक एट दिस, ये पेरेंट को मैंने यहाँ से ले लिया। ओके, दिख रहा है ना, पेरेंट मैंने लिया क्योंकि आपने यहाँ पे देखा होगा कि फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टार्टर पेरेंट होनी चाहिए। अब ये स्टार्टर पेरेंट की इंफॉर्मेशंस आपको फॉर्म फाइल में डाल देना है। शायद कॉपी नहीं हुआ, लेट्स सी, लेट मी रिपीट। यहाँ से मैं पूरी चीज़ों को ले रहा हूँ, बार बार कितना लूँ यहाँ पे, और ये ग्रुप आईडी पोर्शन डिलीट कर देंगे बाद में। ओके, अब इस फाइल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ से जरा कॉन्फ़िगरेशंस को गौर से देखो, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल आई, ये इंडेंटेंट कर देगा ऑटोमेटिकली। लुक यहाँ पे ग्रुप आईडी आरटी फैक्ट, और ये चीज़ें हमारा पहले से है, इसको हम डिलीट कर देंगे। ये जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट की मैवन ब्रेस प्रोजेक्ट, look at this, on top already we have group id, artifact and versions. अब now, अब ये descriptions और ये जरूरत नहीं है। ये जो parent जो है, this is what is called Spring Boot Starter Parents, and ये सही में parent है। parent का काम क्या होता है, घर में हमारे सारे problems को देखना, look after our all problems, and this is what this parent Spring Framework parent does. ओके, सो दैट इज वाई आप अब यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज, जावा 8 चाहिए, तो ये प्रॉपर्टीज ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्शंस काइंड ऑफ थिंग होती है कि ऑलरेडी जावा वर्जन्स वुड हैव बीन मेंशन्ड इंटरनली, सो इफ इट इज लेस देन जावा 1.8 then the system will be updated to java 8 automatically by using this properties entry, and this is the dependencies we have. वन डिपेंडेंसी हो गया स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, अगेन सी द स्टेप्स, जावा 8 के बाद ये डिपेंडेंसी चाहिए, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब एंड अदर डिपेंडेंसीज का भी हमें काम नहीं है। स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब एंड स्प्रिंग बूट टेस्ट, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो रहने दीजिए। एंड दैट इज व्हाट only one dependencies is needed. अच्छा, तो यहाँ पे ओके हो गया। और ये जो है प्लगइन्स, दैट इज द plugins which is helpful, which task of this plugin, job of this plugin will be to allow our applications executes. That's it. इस तरह से ये POM file entry configurations हमारा complete है। Once this is done, you have to just press Control S. As soon as you press Control S, all the magic happens. ये हमारा इसलिए फास्ट हो गया क्योंकि things are already into my local repository. If at all it is not there, then it will take some 2 to 3 minutes or 5 minutes also, depending on the web speed. Look at this. How many all this list of dependencies gets installed. The web starter we have for Spring Boot jars and all, then for
log files entries you have. So all these are the different set of jars and dependencies which Spring needs and download for you. If at all, if this Maven wouldn't have helped, there is a huge problem. Okay. So now we have completed all those 5 steps. तो इस 5 steps में हमारा काम बहुत सिंपल था. पॉम फाइल में पांचों एंट्री कर देना, और पांचों एंट्री करने के लिए आपको गूगल करेंगे, पॉम फाइल सिंपल मिल जाएगा, गिटहब पे मिलेगा, बहुत सारे जगहों पे मिलेगा. वो 5 आपको याद रखना है. और अब तो हम लोग क्रिएट कर लिए हैं, तो वो तो आपके मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसी से यूज कर सकते हो. नाउ अब यहाँ पे जरा अब ओपन करें चीजों को, है ना. और ये हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस है. नाउ वन थिंग, in order to complete this simple application जो अभी दिख रहा है Spring Boot applications, you have to write down Spring Boot annotations here, just like this. Look at this, Spring Boot annotations we are supposed to write before the now applications. So this is the first thing you have to do. You have to write a Spring Boot annotations before this applications class which is containing main functions. इस class का नाम कुछ भी हो सकता है. First thing you have to do. And the second thing what you have to do, you have to call this Spring applications.run method. That's it. In this how, just by doing these steps. Why I think we have to create application class. application class बनी ना. This is what is applications class. The class is calling itself. नहीं वो हटा रहा हूँ, वो गलत है. ओके, वो कॉपी पेस्ट था ना, इसलिए सारा. ओके, नाउ सेव द थिंग. तो आफ्टर दिस, लुक एट दिस. आप यहाँ पे वन लाइन स्पेस जरा हम दे दें. नाउ यू जस्ट सेव इट and try to execute what happens. Now see, once the Spring Boot runs, this kind of a screen you will get. The Spring is running, and if this is the output, ये तो simply हमारा वो print out message है, और तो कुछ नहीं है. Now इस informations को जरा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे. यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, Tomcat started at port 8080. Tomcat start हो चुका है 8080 पोर्ट पे. Look at this. That is the feature of Spring Boot, that Tomcat is embedded into itself. Now, once the application server has started, you can go to the browser. You can go to the browser and type localhost 8080. Now you are getting this error message. This is what is the beauty of a Spring Boot. It's working. If this kind of error page is coming, that means it is working, guys. It's working. Now coming to our code, how that error message comes. We have just created applications. We have just created applications, and our applications is running. Tomcat has started and it is showing on browser, but it is giving an error page.
because already I said that Tomcat is having the feature of auto configurations. So when it doesn't find any things to be displayed, that is, there is no URL mapping, then in that case automatically that error, it has been configured to display the error page. Okay, so this is the first step what I have done to create a Spring Boot applications we have set up. अब हमारा अगला काम क्या करना है, कंट्रोलर क्रिएट करना. वी हैव टू क्रिएट रेस्ट कंट्रोलर. दैट इज, यू हैव टू क्रिएट ए क्लास. कंट्रोलर का मतलब एक क्लास बनाना है. लेट्स सी न्यू क्लास. मान लो दिस इज फर्स्ट कंट्रोलर. FIRST first controller, and that's it, finish. अच्छा, एक चीज आपने ध्यान दिया कि इन द सेम पैकेज वेयर एप्लीकेशंस है, कंट्रोलर भी वहीं पे मैंने क्रिएट किया. ऐसा नहीं कि वहीं क्रिएट करना है, इट कैन बी एनीवेयर, बट राइट नाउ इट इज देयर. ओके, नाउ whenever you create a controller, always you have to annotate with REST controller, जो ऑलरेडी मैंने स्लाइड पे आपको दिखाया था. Always you have to annotate with REST controller. Okay, you have to annotate with REST controller. Okay, हमेशा ये करना है जब भी कंट्रोलर बनेगा, that has to be annotated with REST controller. Now what REST controller tells to Spring or Spring Boot, that few annotations you have to keep in mind, that is a component controller, service controller, a REST controller, and there are few more. Whenever a Spring looks these control annotations, automatically object of those classes are created and keeps them with itself. Okay, now I am going to create a method of this controller which is going to be called. Okay, simple method it is. Public, मान लो a string, it returns any message, it can be anything. Suppose मैंने नाम दे दिया soap. This is a kind of method which I want to be evoked. Okay, so the method which has to be called should be annotated with the another controller called आपका request mapping controller. Okay, that is request mapping controller. तो दो कंट्रोलर को हम लोगों को देखा था, हमने कहा था now you have to write down the name which should appear on the URL that will call this functions of this first controller, that is REST controller. Let's say I'm writing the name test. Okay, it can be anything. Now it should return any message because मैंने functions का return type string किया है, क्योंकि whenever this returns the message that will be sent to the client. Okay, so that message I am showing. So return, या मान लीजिए जैसे मैंने बना लिया string MSG, यहाँ पे हमने लिख दिया HTML का फॉर्म में, सपोज H1, टैग हमारा क्लोज हुआ, हेलो, HELLO SPRING, Spring Boot applications. Okay, let's see what happens. Then I shall return that MSG.
Okay, let's save the masses. The Spring mapping is what? Test. Got it? Now before this, you don't forget to terminate the server which is running. Save all the file, it is saved, and go to the applications folder and execute. It's running here. Now we have to go to the browser and see what happens. Okay, that controller, यहाँ पे हमें क्या देना है? Mapping क्या था? Test. Look, now my URL that I had configured, you have mapped the name test, and so it calls the test which has been mapped. So now look, when compare this, compare to a Spring, how easy this is. No configurations problem. हमने ऐसा कुछ भी create नहीं किया है. So these two annotations you have to remember. Whenever you create controller class, this must be annotated with REST controller, and all the method which has to be called from outside by passing the URL request should be annotated with request mapping in this manner, and always it should return the string data which will be moved back, which will be returned back to the client. So number of REST controller you will go on creating, and you will implement certain business logic. Now let us consider, is it clear till this point? Are you comfortable? Akshita? Yes, sir. Steps are more easy. It's easier than creating Spring applications. Okay, now let us consider few more issues. Now say this, the message which is being displayed is also having certain business logic. Remember what I am telling you, that the kind of business logic is what? Maybe you are giving the result back. Okay, so there is some processing kind of thing. Now look what happens. Now there is a business logic, the another logic, that means किसी भी लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए तो कोई क्लास होगा ना, उसमें कुछ प्रोसेसिंग होगी, सब कुछ होगा. मान लो हियर इटसेल्फ फॉर सिंप्लिसिटी, इसी फाइल में मैं एक और क्लास क्रिएट कर रहा हूं. ओके, लेट अस से क्लास इज माय सम लॉजिक. सम कोई भी लॉजिक हो सकती है, मे बी रिजल्ट हो सकता है, प्रोसेसिंग हो सकती है, किसी चीज का बिल हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. ओके, नाउ देयर इज अ क्लास, सपोज उसका नाम मैंने दे दिया सम लॉजिक. ओके, सम लॉजिक कुछ भी, मान लो लॉजिक 1 कर दी. ओके, एंड लेट्स से आई एम हैविंग ए मेथड. यहाँ पे भी हमने एक मेथड बना लिया, पब्लिक void, sorry not void, string. मान लो ऐसे ही सम computations, कुछ भी कोई काम हो रहा होगा ना, do the task, do sk task. Okay, now it is doing certain task. यहाँ एरर क्यों आ रही है? अच्छा, वो रिटर्न अभी मैंने किया नहीं. यहाँ पे
return certain results. मान लो रिजल्ट, कुछ भी एक मैसेज दे दिए, रिजल्ट 1, टास्क 1 के अंदर से रिजल्ट 1 हो गया। अब ये सम बिजनेस लॉजिक हो गया। लेट्स सी, दिस टास्क इज नीडेड हियर, दिस टास्क इज नीडेड हियर। ओके, सो व्हाट हैपेंस दैट इसका कोई ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, मान लो ऑब्जेक्ट O1 देते हैं, OBJ1 ऑब्जेक्ट 1 न्यू सम लॉजिक। तो इस तरह से सो ऑब्जेक्ट्स गेट्स क्रिएटेड, है ना। And here I am evoking that method, obj1 dot to task is the method which is being called, and whatever things it is calling. Now I am having br tag here for new line, browser पे तो slash n नहीं काम करेगा, new line, and whatever message is getting returned back, हम उसमें कॉनकैट कर लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ रिजल्ट आ गया, सम टास्क लॉजिक 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिजल्ट 1 लिखा। लुक एट दिस। अब नाउ लेट मी क्लोज द सर्वर फर्स्ट, let me close the server first, run it, then I shall explain what I have done. After closing server, I have restarted them. Spring once running, no error is anywhere. If there would have been any error, then certainly because of exceptions, the server wouldn't have been allowed to execute. Now let's refresh the page. Look here, what happens? Hello Spring OB2 छूटा हुआ है, Spring Boot applications and result 1. ये तो उसका था method, and the business logic what returned the data वो है, और दोनों डेटा को concat कर दिया गया, दोनों results को we concatenated. Okay, Spring Boot में T यहाँ पे है। Now let's see, अब इसमें भी हम कोई टैग यूज कर लेते हैं ताकि वो बोल्ड दिखेगी। H1 यहाँ पे, सपोज यहाँ पे हमने H3 यूज किया, H3 और एक BR टैग, सेव हुआ। लेट्स स्टॉप। अब यहाँ पे समझने की जरा कोशिश करो, ये क्या हुआ। दिस इज कॉल्ड फ्रॉम द URL, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज डूइंग रिक्वेस्ट, इस फंक्शंस को गई, इस फंक्शंस ने टेस्ट URL से जो रिक्वेस्ट आया, दैट रिक्वेस्ट को प्रोसेसिंग करने के लिए यहाँ पे सर्टेन बिजनेस लॉजिक है। इट इज हैविंग ह्यूज, यहाँ पे ह्यूज वर्क है। जो भी ये टास्क है उसके रिजल्ट्स को यहाँ पे लौटाया गया इसे। नाउ द क्वेश्चन इज, वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ सम ऑब्जेक्ट 1. This is exactly we do not want in the case of a Spring or a Spring Boot. Here, if objects are created, that is of hard coding, then from external world, it cannot be changed, and that will not be the example of loose coupling. So at the time of unit testing, it is not possible to do that. So we exactly do not want to perform this object creation. This is a standard object creation, conventional process. Conventional way of object creations. Conventional मतलब जैसे जावा में हम लोग करते हैं। Okay.
ओके, हम तो यहाँ पे स्प्रिंग को फॉलो करके करेंगे. नाउ फॉर दैट लेट मी क्रिएट वन मोर क्लास. अब इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ये जस्ट मैंने ये दिखाने के लिए किया कि इन स्टैंडर्ड वे ऑल्सो वी कैन डू, but I do not want to do so. So I am going to create a logic 2 और यहाँ पे हमें result 2 को मैंने लिख दिया. And what I want to tell you that अब ये ऑब्जेक्ट हम सेकेंड ऑब्जेक्ट टू हम इस तरह से क्रिएट नहीं करना चाह रहे हैं. rather than I want to be created automatically and injected. So हम यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं स्प्रिंग वे ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. उसके लिए हमें क्या करना होगा, यू नो दैट. क्या करना होगा गाइज, इफ क्लास सम लॉजिक 2 के ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली बने तो उसके लिए क्या करना होगा, इट हैज टू बी एनोटेटेड विथ कंपोनेंट्स. सर्विस भी होती है कंपोनेंट आई एम डूइंग. हम लोग ऑलरेडी कल देख चुके हैं. ओके, so as soon as component, okay, this is component. Now of bin, as soon as component, जैसे ही as soon as Spring detects that some logic 2 class is a component class, so object of some logic 2 will automatically be created, and that is what is called bin or POJO object. And I want that the object of some logic 2 that was created by bin and it is still with bin, that object should automatically come to object 2, remember. And for that we have the annotations called, remember, auto wiring. Yeah, auto wired, not wiring, AUTO, auto WIRED, auto wired annotations. So very simple, चीजें तो मिलती जुलती हैं. That is why I had taken those many classes to make the foundations ourselves consolidated so that we do not have any problem in understanding. So full of annotations, you have to try to understand, try to remember, try to the way we use them. So we have to understand the entire structure. इसीलिए तो इसको framework कहा गया. Remember why it is said to be a framework, to make the entire complex scenarios, situations, applications a standard we have been created so that the user has to develop their programming, their applications, their project by using those patterns. So here that is what is needed. तो ये जो first object मैंने create किया, that is only to show you, but that will not be our use. Remember, this is only for tutorial purpose. Always we will create object in this manner, creations of object. So what happens, keep this in mind. In the PPT slide we had seen how this automatically Spring Boot will create object by scanning into the local package. First of all, the package what has been mentioned here. So the package is a Spring Boot. So in this package itself, it will search the component which has already been created and auto wired. So when you run this, object 2 को भी हम यहाँ पे लेना चाहेंगे. तो let me
do the copy paste. Okay, let me do the copy paste. ठीक है ना? And this refers to the same. मैंने इस component class को इसी में रखा है, separate भी हम कर सकते हैं, ये ऑलरेडी क्लोज है. लेट मी एग्जीक्यूट एप्लीकेशंस क्लास पे, एप्लीकेशंस पे आएंगे और यहाँ पे देखो, यहाँ तो बस एक बार एप्लीकेशंस रन का ही हो गया. यहाँ देखो कुछ भी मेंशन है कि हम कौन से क्लास को, हमारा कंट्रोलर कौन सा है, किसको रन करना है, नहीं कर, कोई कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है. इनफैक्ट दोनों में डायरेक्टली ड्यू टू आवर कोडिंग देयर इज नो कनेक्शंस एट ऑल. ऑटोमेटिकली जितने भी क्लासेस, दे आर ऑल कंट्रोलर क्लासेस, जिसके पहले रेस्ट कंट्रोलर लग गया, those which have been annotated by REST controller, that's it. Automatically object of those will be created, and whatever the URL mapping has been done, that will be called and executed. So let's run the applications first. You do the right clicking, and here it goes, Java applications. There is no error, everything is fine. अब इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे एंड एप्लीकेशंस को, पेज को रिफ्रेश करेंगे. लुक, वी आर हैविंग रिजल्ट 1, रिजल्ट 2 एंड सो ऑन. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी. यहाँ पे क्या हो गया कंट्रोलर में कि दिस फर्स्ट कंट्रोलर इज डिपेंडेंट ऑन दिस ऑब्जेक्ट ऑफ लॉजिक 2, एंड इस कोड में हमने कहीं भी ऑब्जेक्ट लॉजिक 2 की ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट की है. दैट ऑटोमेटिकली गेट्स क्रिएटेड. नाउ आई एम ट्राइंग टू रिमूव दिस. लुक दिस, यहां से हम इसको रिमूव करके, मान लो सपोज कंट्रोल सी कट करते हैं और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. paste, do the paste operations. So your Spring Boot is intelligent. Automatically it, हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो फाइल क्रिएट करेगा. एंड लुक, गया. लेट्स डू द सेविंग. बस मैंने उसको सेपरेट कर दिया है. फर्स्ट कंट्रोलर के पास हम आते हैं. फर्स्ट कंट्रोलर, अब यहाँ पे क्या है, उसे एक बार कंपाइल करना होगा, सेव करना होगा. सम लॉजिक 2 कहाँ चला गया, लेट्स सी. सम लॉजिक 2 सब ठीक है. सर वो आपने दूसरे प्रोजेक्ट में से डाल दी फाइल. ओहो, अच्छा वो ओपन था ना. चलो वहां से हम लोग कट करते हैं. यहाँ से कंट्रोल उसको कॉपी कर लिए, उसको बंद करो. चलिए, एंड लेट्स पेस्ट. आ गया. अब लेट्स सी योर एप्लीकेशंस. ओके, सबसे पहले इसको हम लोग क्लोज करेंगे एंड रन करते हैं. ओके, अब यहाँ पे तो कोई चेंजेस होनी नहीं है, पेज पे तो वही चीजें दिखेगी. तो नाउ अब यहाँ पे जो मेन चीज ऑब्जर्व करने की है, दैट इज आपकी द सेम पैकेज के अंदर है. कौन सा? नाउ हाउ योर बूट, स्प्रिंग बूट finds that where is the class whose object has to be created. That's the question. हमने तो यहाँ पे लिख दिया
I want the object of some logic 2. How will it know? Will it scan all the packages? No. What it does is it automatically looks this controller. Let's go to first controller. And what package it sees? It is a Spring Boot 1. So it is going to search from that itself. ठीक है ना? So it will get that from this package and does. But when there are two different packages, let's say, then component scan becomes important. Already we had seen studies class component scan. Let's see the situations. Okay. If it is maybe in different package, if maybe, let me create what happens. Let me create a class, one more class, which is into this package Spring Boot dot suppose test. Okay, and the class name is maybe anything logic, suppose 3. Logic 3 I had given, simply logic 3, and finish. अब look here, I am having logic 3 class here. Now let me create this as a component. Okay, this is a component. So let's create the same functions. Some logic 2 में आता ना, हम इसको copy कर लेते हैं. And this is what I am having inside here, और इसको हमने result 3 कर दिया. Okay, and now I want that this logic 3 to be called into this controller. Look, अब हम एक और कर लेते हैं लॉजिक 3 टाइप का, और इसको हम ऑब्जेक्ट 3 कर लेंगे. ओके, ओके. नाउ लॉजिक 3 इज ऑटो वायर्ड, एंड लॉजिक 3 के अंदर भी तो सेम मैसेज है. लेट्स डू द कॉपी पेस्ट. ऑब्जेक्ट 3, नहीं, वहां डू टास्क नाम नहीं, वहां पे नाम क्या है? लॉजिक 3 के अंदर टास्क तो डू टास्क ही है. क्लास को सेव करना पड़ेगा लॉजिक 3. एक सेकंड देखो ना, डू टास्क इज नहीं, यहाँ पे इशू दूसरी है. देखो यहाँ पे देयर इज नो सिंटेक्स एरर. सेग्रीगेट करने का तो मतलब हो गया अलग करना. हम अभी अलग कहाँ कर रहे हैं, हम तो उसको कनेक्ट करना चाहते हैं. लेट्स सी यहाँ पे, जस्ट सी ऑब्जेक्ट 3. इस लाइन पे तो एरर नहीं है. इस लाइन पे एरर क्या है? कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं. लेट्स सी ऑब्जेक्ट 3 डॉट डू टास्क. See here what is telling. Do task is undefined method in logic 3.
डू टास्क तो है ही। फिर एक बार सेव कीजिए ना, ऊपर स्टार दिखा रहा है, मतलब अभी अरे सेव हाँ नहीं। हाँ, वो सेव नहीं है, दैट इज ओके। ओके, अब हम इसको जरा एक बार इसको ब्रेक करते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि नाउ दे आर इन टू डिफरेंट पैकेज। हाउ Spring Boot behaves, that was the point to be tested. Okay, so let's go to applications and do the executions of this. Okay, it is not giving any error. Now, since it is not giving any error, but it should have given, it will give sometimes. When that is the situation, I shall tell you, it's giving the result 3. So at this point there is no question of discussing. Here what happens, look at this two thing. A Spring Boot 1.test, a Spring Boot 1.test package is inside a Spring Boot 1.test. If I can keep completely separate, not inside this, not inside this, not inside a Spring Boot. Let me try one more. Time is there, it's not an issue. Totally different package. Class. Class. मान लो the package name itself is only test. Only test, that's it. And class name is logic logic 4. Okay, and do the finish. अब look at this. This is totally different package. Okay, अब in logic 4 I shall simply do the copy paste and try to see what logic 4 does. Then we shall conclude our knowledge. Okay, यहाँ सबसे पहले save होना चाहिए. Let's see save. एंड लॉजिक 4 का कंट्रोलर में जाके हम एक ऑटो वायरिंग करके क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट एंड कनेक्टेड. सो व्हाट ऑटो वायर डज, द क्रिएटेड बिन ऑब्जेक्ट्स बाय द कंपोनेंट एनोटेशंस. बाय नहीं, मतलब whichever the classes are annotated with component, those classes objects are automatically created by Spring Boot and यहाँ पे स्पेस मार दो एंड यहाँ पे हम एक बार और कॉपी पेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपेंस. दिस इज द फाइनल टेस्ट. ओके, so when again let me close it and compile applications. This is the scene which I wanted to get. Look at this. यहाँ पे क्या हुआ? This is what I was telling you. कि how the Spring Boot creates object. Where does it scan? There is a default scan path, and by default it will scan into the direct package itself. And which is the package? Applications package. For that, here you can see this. It has failed to start the applications. Exceptions got generated. Why? You see the applications, Spring Boot applications. यहाँ पे क्या है कि by default
it will scan this package Spring Boot 1 and earlier Spring Boot के अंदर ही ये सारी क्लासेस थी. Spring Boot के अंदर डायरेक्ट था या Spring Boot के अंदर Spring Boot डॉट टेस्ट के अंदर था, तो फिर Spring Boot 1 डॉट टेस्ट भी तो Spring Boot 1 के अंदर ही आ गई ना. So by default it will scan the same path, same package. If at all we are referring the component class which is into the different package, that is what we created right now here. So object, to create this object, the bin should Google Spring Boot should search into this path also. So this path also should be scanned. एंड स्कैन करने के लिए कौन सा एनोटेशन था? component scan. कंपोनेंट स्कैन. कंपोनेंट तो ऐसे लिख के स्पेस बार मार देंगे वो अपने आप आ जाएगा. कंपोनेंट स्कैन. एंड कंपोनेंट स्कैन करने के बाद आपको उसमें उस पाथ का नाम प्रोवाइड करना होता है ना, जिसमें स्कैन करना होता है. तो किसमें स्कैन करना है? टेस्ट के अंदर स्कैन करना है. So this is what you have to mention here. So in order to create object, this should also scan into test package. By default, when we do not provide this component scan, where will it be scanned? It will be scanned into the package what is mentioned. So that becomes the default applications package. Default मतलब जो यहाँ mention किया हुआ है. So only within that package it is going to scan. So if at all you are referring, you are creating component of different package, that is not at all going to be scanned, and for scanning you have to refer, you have to use the component scan annotations. ये तो अभी स्टॉप है ही. एवरीथिंग इज सेव्ड. यहाँ पे हम let's try to run again and what happens. See, the error goes off. This is the question कि where does it scan? स्कैन के लिए एक पाथ होना चाहिए ना, पैकेज होना चाहिए. सो बाय डिफॉल्ट तो ये मेंशन कहाँ करना है? इनटू द एप्लीकेशंस क्लास वेयर यू हैव स्टार्टेड द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस यू हैव क्रिएटेड, देयर यू हैव टू मेंशन. अब अगर एक से ज्यादा पैकेज है देन ऑल दोस पैकेज हैज टू बी मेंशन्ड हियर. नाउ लेट्स गो एंड try to execute again. So there is one mapping is also needed. This application has no explicit mapping for error. You see the feedback status not found. There is some error. Let's see. One second. Let me first of all try to make it comment. Let me comment AutoWire 4, that was the logic 4, and because of that what it is giving, let me go and execute. Now let's see what kind of, still a second. So let me do control refresh. सर हमने शायद लॉजिक 4 में @ कंपोनेंट नहीं लिखा था. देख लेते हैं एक बार.
If it is so, then it is nice. Oh, right. But it was not giving any error at the time. At executions time only it gave. तब तो तुम्हें create करने आ गया. So I am quite confident. ऐसे लिखो COM मार दो स्पेस बार, कंपोनेंट आ गया. ओके, पहले इसको क्लोज करते हैं एंड यहाँ से हमारा कंट्रोलर से कमेंट हटाते हैं, है ना. और यहाँ पे एप्लीकेशंस रन करते हैं. Applications is running, then going there. Still it is giving. What may be the reason? Whole function F5 test 1 second. Is it because some controller mapping test? If I comment all those, not removing, just let me remove this auto wiring. And let's see in this situation what happens. See, still it is having the error. I think that you have changed the default directory to test. Test is this. Acha, once again, let me change this URL name. Okay, this ये तो टेस्ट ठीक है. इन द कंट्रोलर मैपिंग जो हमारा है, suppose I am simply saying so, SHOW, so. Okay, let's see. Yes, sometimes okay, boot is running. अब यहाँ पे तो नाम बदल के हो गया so. Still error page. I think we should read the console of the Spring if we could get something from there. Logic 4. Maybe suppose I'm removing this component, so it becomes normal class. Now it's a normal class, so no object will be created. No problem, let it be whether this class is there or not. Now as per logic test 4 मैं use भी नहीं कर रहा हूँ. Then in applications, let's run and see what happens. Why suddenly started giving problem? Okay, again. So still it is having. Let me remove a scan and then try to see. Remove this scan. Now it is like
अर्लियर, कंपोनेंट स्कैन की तो यूज भी नहीं हो रही है। Okay, let me do the final try. So the conclusion is that scan started giving problem. So when it is in two different package, the scan started giving problem. Okay, anyway, I shall complete this point tomorrow. So till this time, what I have to do is that I have to prepare all those recordings today's and this thing, and also I'll do the what is that? I'll take that current Eclipse ID what I'm using. I'll do the zip and today's and the yesterday's both the files, the Spring Boot applications and the Spring जो भी हमारा कल का जो टोटल जो आपका डेमो था फ्रॉम 1 to 9 और 8 whatever it is that will be zipped और उसको लोड करेंगे and the rest all from even having into two different packages how the things will be scanned and the other remaining features we shall try to see in tomorrow's sessions. Then after tomorrow's sessions हम लोग in more rapid and easier way में स्प्रिंग इनिशियलाइजर के द्वारा क्रिएट करेंगे देन वी शैल क्रिएट आल्सो रेस्ट एपीआईज एंड ट्राई टू कॉल इनटू अनदर एप्लीकेशंस till then and let me close it. So with these steps you would have understood the easy way of creating. Main thing what you have to keep in mind, let me recap that into the POM file which is the basically configurations file for the Maven, you have to first of all enter this, do the parent entry where you have a Spring Boot starter parent informations to be entered. Actually this is the parent of your Spring Boot applications and it takes care of all the versions of all the compatibility issues. It will be resolved automatically. That is why in this dependency you are seeing that no version informations we are writing. We are not at all writing any version informations. Look, one thing it came into my mind. So I am just pressing the control and moving mouse pointer here. Here you are seeing you can open the POM file of ORG Spring Framework Boot Starter Web. Okay. So just this is the first dependencies and so let's see to open this POM file. Here you can see that these are all the dependencies, that is the POM dependencies of Spring ORG, and in that already you are seeing the different versions, all these dependency informations which has been done for us, and that is why our role becomes so less. That is why we have so less number of entries into our POM file, that is XML configurations file. Okay, so that is what I have opened it. Let me close it. How we did it? Just you have to press Control button, press the mouse pointer over there, and then you can open all this and see. Okay, let's see here. You have okay. This is how we create boot applications in a very simple manner. तो आसान काम हो गया. POM फाइल में एंट्री करना है वो सारा इंफॉर्मेशंस
एंड उसके बाद आपका मेन एप्लीकेशंस फोल्डर जो आपका है दैट इज ये एप्लीकेशंस क्लास, इसके पेरेंट क्लास स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से एनोटेट करनी है, that has to be annotated with spring boot applications, and in the main functions always you have to call this run method of run, which is the static method of spring boot applications, and it should pass the applications object, that is class, and if arguments arg is what is command line argument. There are certain informations which we can pass through command line, and that also can be passed to the Spring applications, which we may see into the coming successive sessions, how to pass command line parameters and all command line informations, some configuration issues. Okay, any queries? Sir, I have a query, but it is related to a design of a class. What is that? You just tell me. Sir, let us assume in inversion of controlled designing principle, it is said that we have to pass all the dependencies using the interface, means using the abstraction. But let us assume that we have a main interface and we have child classes of it. But the child classes have some additional features. Means while implementing the class, it has implemented some more features into it. But while passing, but while in the main application where there is run method or injection where we are doing, when we pass the object, it gets the reference of the parent. Right. But in that case, when we are using the parent reference, we cannot access the properties and the methods that are declared in the child. So in that case, sir, how would we tackle it, and means what can be the possible solution? Because when I was designing it, means I faced it. First of all, your design is correct. Always when we think of large applications, always Yes, when you design it, there will be a hierarchical inheritance. So there is nothing wrong into your design. Problem is how will you auto wire them? Because वहाँ पे तो उसके class के name को लिखना है, and every parent class is the same. तो वहाँ पे there is one more. I shall take up your problem tomorrow. There is one more qualifier annotation. Okay, sir. There is one more qualifier annotations that has not been taken considerations into till now into our examples. So I understood your problem. So as per your requirement, मैं एक छोटा सा 2-3 क्लास का एक प्रॉब्लम बना के and वहाँ पे एक qualifier annotation है that has to be used in order to solve your problem. और वो अभी तक हम लोग का यूज नहीं हो पाया. So that is one annotations is there. I got your problem. Okay. Okay. So now we will stop our today's session, and after this session right now I shall upload the recording as well as all the Java examples of a Spring Boot as well as a Spring of previous days, so that you can refer and do. And also Achita was having problem, and 1 or 2 more student was telling me the same problem, but unfortunately they are not present today. So that is why I shall also update the Eclipse IDE versions on my Google Drive, and you can download them and you can use them very easily. Okay. Good night, guys.